3 घंटे वाला लिया, उसके बाद उसमें मैंने ये जैसे ये एक्सप्लेन किया बैच मिनी बैच वो आपने अपलोड नहीं किया अभी तक वैसे लास्ट वाला नहीं किया वो कर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ जस्ट क्विकली, जो इससे प्रीवियस लेक्चर है जो अपलोड इंशाल्लाह आज हो जाएगा, तो उसमें ये डिटेल है इसकी। स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हम एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल को जब लेते हैं एक एग्जांपल के लिहाज से डेरिवेटिव आता है उसको इमीडिएटली अप्लाई कर देते हैं अपडेट को, और फिर सेकंड जो एग्जांपल है वो अपडेटेड डब्ल्यू पे अप्लाई होती है। बैच ग्रेडियंट डिसेंट ओवरऑल में हम हर एग्जांपल पे अपडेट कंप्यूट करते हैं, लेकिन अप्लाई तब करते हैं जब सारी एग्जांपल अपडेट अपना कंप्यूट कर चुकी होती है। फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल अपना अपडेट लेके आती है लेकिन वो अपडेट हम अप्लाई नहीं करते, सेव कर देते हैं। दूसरी एग्जांपल अपना अपडेट लेके आती है, जब ये सारी अपडेट्स एट द एंड हम इनका एवरेज लेते हैं और एवरेज अपडेट ऐड करते हैं डब्ल्यू में, फिर सेकंड एपॉक चलती है। इट टर्न्स आउट कि अगर मैं स्टोचैस्टिक पे में चलूँ तो मुझे एक आउटर लूप लगाना पड़ता है कि एक एग्जांपल के लिए मुझे करना पड़ता है, इट बिकम्स वेरी स्लो। अगर मैं फुल बैच पे मोड में चलूँ तो हैंडलिंग अ लॉट ऑफ डेटा कंप्यूटेशन इज वेरी एक्सपेंसिव एंड समटाइम्स दैट काइंड ऑफ बैच मोड बिकम्स स्लो डाउन द कोड। सो इसका एक फिक्स लोगों ने ये निकाला है कि दे डू मिनी बैच। सो वो डेटा के छोटे छोटे चंक्स बना लेते हैं और हर मिनी बैच के अंदर इट रन्स इन अ बैच मोड, लेकिन दो बैचेस के दरमियान इट रन्स इन अ स्टोचैस्टिक मोड। सो एक बैच से आप सारी एग्जांपल से अपडेट लेते हैं, लेकिन जब पूरा बैच कंप्लीट होता है तब आप अपडेट करते हैं और दूसरा बैच शुरू होने से पहले अपडेशन हो चुकी है। इट टर्न्स आउट दिस इज फास्टर एंड इट कैन हैंडल अ लॉट ऑफ डेटा एंड स्टफ लाइक दैट। सो डिटेल्स आर देयर इन द प्रीवियस लेक्चर, सो दैट्स व्हाई वी यूज मिनी बैच। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको आंसर करने बैच नॉर्मलाइजेशन टेस्ट टाइम पे कैसे करते हैं। सो देयर आर सेवरल वेज। एक तरीका ये है कि आप एक बैच को एज अ रेफरेंस बैच कंसीडर कर लें एंड यू कैन पिक दैट बैच रैंडमली एंड कंसीडर दैट बैच इज माय रेफरेंस बैच, और उस बैच का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन या उस बैच का मीन और स्केल फैक्टर्स हर लेयर पे कंप्यूट करके सेव कर लिया, और दुनिया जहाँ पर जो भी बाकी ट्रेनिंग डेटा है और जो भी टेस्ट डेटा आएगा उसमें उसी रेफरेंस बैच का मीन सब्ट्रैक्ट होएगा और उसी रेफरेंस बैच का आपने सब्ट्रैक्ट करना है, स्केल फैक्टर आपने यूज करना है। तो पिक अ रेफरेंस बैच randomly, use that reference batch का mean and scale factors to scale every other batch in the training time and at the test time. Make sense? Yes. अब सवाल ये है कि वो बैच खुद जब ट्रेनिंग प्रोसेस में से बार बार गुजरेगा तो उस बैच के अपने भी हर एपॉक के दौरान डिफरेंट मीन्स एंड वेरिएंसेस होंगे। मेरी बात समझ में आ रही? फर्स्ट लेयर पे तो हमेशा ही सेम मीन होगा फर्स्ट लेयर पे, क्योंकि वो रॉ इनपुट है। फर्स्ट लेयर पे मीन हमेशा वही होगा, फर्स्ट लेयर पे स्केल फैक्टर हमेशा वही होगा। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर पे एक ही बैच का डिफरेंट टाइम से वो बैच गुजरेगा। यानी लेट्स से वो बैच है तीसरा, रैंडमली आपने तीसरा बैच फिक्स किया, दैट इज माय रेफरेंस बैच। वो तीसरा बैच जब आया था तो उसने कुछ मीन्स और स्केल फैक्टर जनरेट किए हर लेयर पे। यही तीसरा बैच जब अगली एपॉक पे आएगा, अगली एपॉक पे जब आएगा तो क्या इस ये जो नए मीन्स हैं क्या इनको यूज करना है या प्रीवियस को यूज करना है, स्टफ लाइक दैट। ऐसा हो सकता है कि हम हर दफा इसका मीन जनरेट करें और हर एपॉक पे जो लेटेस्ट मीन और स्केल फैक्टर है वो यूज करें, और कन्वर्ज करने से पहले जो लास्ट लेटेस्ट मीन और स्केल फैक्टर से वो सेव किए हुए हों और टेस्ट डेटा में सभी वही सब्ट्रैक्ट करें। दिस इज वन वे। A better strategy is to use running mean and use all training data, and the idea is the following. This is the first epoch. Clear? First epoch, first layer. First layer, compute the mean and the scale factors. First batch, compute the mean and the scale factors. Compute the mean and the scale factors. Yes? Second batch. First epoch. Second batch का mean कंप्यूट करें और scale factors कंप्यूट करें और इन दोनों का running mean दें। अच्छा। By running mean I mean u is equal to odd u beta plus 1 minus beta, जो अभी आपने sample mean जो भी निकाला है। Current, let me call it current.
Say that's it. And save it. सही है जी? Then the same batch goes there. उसका running mean और scale factor कंप्लीट होगा. वो subtract होगा and then move on. Subtraction करने से पहले आप running mean कंप्यूट करेंगे और वो subtract करेंगे. Which means कि जब second batch आएगा तो उसमें से जो mean subtract होएगा उसमें first batch का data भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा. Which should be. मेरी बात समझ आ रही? जब थर्ड बैच आएगा तो थर्ड बैच अपनी कंट्रीब्यूशन डालेगा मीन में, लेकिन ये जब पूरा फर्स्ट एपॉक कंप्लीट हो जाएगा चाहे जितने भी बैचेस है, फर्स्ट एपॉक के बाद हर लेयर पे एक मीन और एक स्केल फैक्टर बड़ा होगा. यस, एक मीन फैक्टर और एक स्केल फैक्टर का वेक्टर. अब जब सेकंड एपॉक कंप्लीट होगी तो आपके जो प्रीवियस रनिंग मीन्स हैं उन्हीं में आप रनिंग मीन्स ऐड करते जाएंगे. यस, मेरी बात समझ आ रही है? जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब आप रोकेंगे प्रोसेस को, तो हर लेयर पे एक मीन और एक स्केल फैक्टर का वेक्टर बड़ा होगा. ये वो मीन और स्केल फैक्टर में अपने टेस्ट डेटा में यूज करना है सबट्रैक्शन के लिए. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैच नॉर्मलाइजेशन. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी वेरी डिफरेंट देन द नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन जो हम करते हैं, बिकॉज द नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन जस्ट हैपन्स on input data. Here every layer has input data. Just normalizing the input at the start, just that is not okay. We have to do more. Make sense? And it turns out that with this batch normalization, the convergence becomes quick, fast, and it partially solves the problem of vanishing and exploding gradients as well, जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ. सही है? It was introduced for removing the covariate shift, but it turns out कि ये covariate shift remove करने के process में जो हर न्यूरॉन की आउटपुट है वो saturation से दूर हो जाती है. हर न्यूरॉन की आउटपुट लिमिट हो जाती है और वो saturation रेंज में जाती नहीं है. Which means कि वो जो derivatives हैं वो भी जीरो के करीब, vanishing derivatives भी नहीं आते. So you use some activation function with normalization, it actually tries to stop the derivatives to become zero as well. Make sense? Okay. I'm telling you a lot of these facts. I mean very quickly. Actually, the things that I'm telling you here in this particular class, these are actually they belong to the full second course of entry on deep learning. This is improving deep learning, the second course, full course. So I'm telling you very important things of that course. So if you want detail, you should, if you have time, you should go through that course series. That's the second course, the practical aspects of neural networks. So yeah, which function to use, this input normalization, batch normalization, और जो भी मैं एक दो बातें और ज़्यादा बताऊँगा. सही है? अगर आप इसमें सवाल करेंगे कि यानी ये हमें समझ नहीं आ रहा है, ये ज़्यादा हो गया, this or that, it might be, but I'm telling you the end results. These are the results. If you want to implement, these are the results you should consider for implementation. Clear it? So I guess batch normalization is done. Should I move on? Yes. Now you know how to do this batch normalization on test points. Yes. Okay. Vanishing and exploding gradients. By the way, ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, ये batch normalization, input normalization, this and that, these are the actual advancements in deep learning. Neural networks और इनके architectures पहले भी मौजूद थे. These are the tricks and hacks that allow very large neural networks to learn. Otherwise पहले हो ही रहा था, neural network का बहुत बड़ा बना भी देते हैं, it was not learning at all. Because किसी जगह पर derivative zero हो गया, वो neuron बस dead हो के बैठा हुआ है, कुछ learn ही नहीं कर रहा, and people have no way to check. So these are the tricks that actually reborn the field neural networks. ठीक है? एक चीज जो सबसे बड़ी कहने प्रॉब्लम थी वो थी vanishing या exploding gradient. ये ना उसका फर्क है. अगर आप gradient को देखें, one intuition of why the vanishing and exploding gradients happen.
ये है कि जब आप बिल्कुल फर्स्ट या सेकंड हिडन लेयर पे जाते हैं और अगर आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो बहुत डीप है, अच्छा, तो मैंने अभी आपको बैक प्रोपगेशन का वो फॉर्मूला बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ रेट इट रिकर्सिवली गोज फ्रॉम द लास्ट लेयर बैक टू द फर्स्ट थर्ड जिस लेयर पे जाता है। अगर आपका नेटवर्क ज़्यादा डीप है तो जो डेरिवेटिव है किसी भी पैरामीटर के लिहाज से द ग्रेडियंट एट द फर्स्ट लेयर it is actually product of several factors. Yes, you can pick again. And if that product contain a lot of numbers that are smaller than 1, then the gradient will become very close to 0. And this is known as vanishing gradient. Clear? और ये जितनी layer start वाली होगी उसमें ज़्यादा इसके chances हैं because product is larger for the starting layers. The number of terms of the product. Clear? ऐसे ही? ठीक है, क्योंकि विकल्प की वजह से total number of factors and they are larger. Exploding gradient problem is the reverse. If in that big product, if many of the numbers are larger than 1, then the total product may become very large. Yes. That is called exploding gradient, and that product eventually is a gradient. हमने last time compute की थी, कोई लिखी थी, remember? What happens when the gradient vanishes at the starting layer, first or second layer, and what happens if the gradient explodes at the starting layer? Let me tell you what happens, and then I will tell you a particular fix to that. If gradient vanishes for several neurons at the very first layer, that means for that, because if the gradient is very close to 0, that weight is not updated. Because in the weight update, you have W equals to W minus some factor times the gradient. Make sense? If the gradient is very small, then the new weight is equal to the old weight, and the neuron is not learning at all. Make sense? W is unchanged or very little change, which means the output of that layer is unchanged, which means the output of the second layer is unchanged. And all the way. बात समझ आ रही? ग्रेडियंट में वैनिश हो नहीं है ना, मेरे रुकना भी तो है जी? ग्रेडियंट में एंड में वैनिश तो नहीं है ना, क्योंकि हमने रुकना तभी है जब वो ब्लेंड करना बंद कर देंगे। Yes, they should vanish for every layer. They should vanish for the first layer, third layer, fifth layer. They should vanish overall. They should not vanish for the very first layer, and then rest of the layers depend upon that, and then just stop there. Make sense? So that's true कि वो vanish होंगे तो हम रुकेंगे, but vanish होने की एक cause ये हो सकती है कि they are vanished just because के first layer पे vanish हो गए थे, and then every subsequent layer has a ripple effect of that. And और ये एक basic problem थी कि अगर आप बहुत deep network बना भी लेते हैं और starting layer पे अगर आप vanish हो गए हैं, rest of the layers they are untrained, they are learning nothing, and the deep network is as good as the network with one layer. And that was a problem. That was a problem with the classical neural networks. And it is now in this deep learning community that come up with these kind of hacks and solutions that actually make things working. Make sense? So vanishing gradient problem, if it exists, it is very, very bad for learning. I mean, you have very deep network, but it's completely underutilized. It is not learning. The layers are being more over. Make sense? Second problem, exploding gradient problem. If your gradient at the very first layer is very, very large, which means the step you are taking is big. Let's say this is your local minima there, right there. Let's say that's our surface. This is our local minima, and we want to reach that local minima, and we want to move in this direction. Let's say, but we take the step and we move there. Say it. And that ripple effect goes to the other layers, and there we move there, and we toggle around the local minima, which means it will take a lot of epochs again to reach the local minima, and we may never reach the local minima, and we always toggle around if we do not play with the learning rate. Make sense? In both of these cases, vanishing and exploding gradients, I mean, the reaching towards the local minima and utilizing the
the power of the network becomes a bottleneck. These two things becomes a bottleneck. Make sense? It turns out that one kind of solution is batch normalization. Batch normalization, up to some extent, solves this problem. It allows the derivative to not go to, it restricts the derivatives to go to vanish or to explode. One. The other kind of hack, which is used, hack or getting practical trick or some statistical properties, that is used along with the batch normalization is the weight initialization. Remember जब हम gradient descent start करने लगते हैं, तो ये weight बिल्कुल पहले iteration से पहले we have to initialize these weights to random values. It turns out that the exploding gradient and vanishing gradient problem has a kind of partial kind of solution if we initialize the weight in a careful way. And people have suggested several ways of initializing the weight. If the initial weights are assigned randomly in a particular way, then the exploding and vanishing gradient problem can be solved to a good limit. And then along with the batch normalization, we can restrict it further. Make sense? And that kind of initialization is called the Xavier initialization, and it is the following. Let's say this is a neuron, this is some neuron, and it has let's say n edges that are coming in. And in those n edges, I'm including the edge which is one edge. N edges are coming in. See? So for this neuron, the total number of weights are n. Yes? Yes. For this particular one neuron, there are total n weights. Because, makes sense? N weights. Yeah. Now, if you, let me call this as, if you initialize all these n numbers in this way, by this notation, I mean all these numbers are normal random variables, normal random numbers. Normal means Gaussian numbers, and they have zero mean, and their variance is 1 over n. If the total number of weights are large, the weights have all the weights, they should not be varied a lot. If the total number of weights are small, they are allowed to have a little variance. That's the key idea. That's the key idea. और अगर आप मैक्सिमम में करने जाएं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं rand n 1n, ये आपको नॉर्मल रैंडम नंबर से रेट करके एक रो रिटर्न करेगा 1 by n की. सही है? या अगर आप n by 1 अगर आप कॉलम में रिटर्न करना चाहते हैं तो n by 1. ये n नंबर्स होंगे सारे नॉर्मल होंगे और 0 का मीन होगा. लेकिन आप चाहते हैं कि उनका वेरिएंस भी 1 over n हो. So you can multiply this with 1 over sqrt n. So ये आपको जो w देगा, ये इस वे में रैंडम नंबर्स हैं कि अगर इन रैंडम नंबर्स का मीन कंप्यूट करें दैट इज 0, और अगर इनकी आप वेरिएंस कंप्यूट करें दैट इज 1 over n. इसकी इंट्यूशन ये ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन कहलाती है. इसके इंट्यूशन उसने ये दी है कि जिस न्यूरॉन में इनकमिंग वेट बहुत ज़्यादा है, अगर वो वेट्स बहुत ज़्यादा वेरी करेंगे और वो वेट्स नंबर में भी बहुत ज़्यादा होंगे, दिस न्यूरॉन विल इम्पैक्ट द मोस्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. सो इसका इम्पैक्ट लिमिट करें, इसकी वेरिएशन, इसके वेट्स की वेरिएशन को कम करें, और जो न्यूरॉन जिसमें इनकमिंग वेट्स कम हैं उसको अलाउ करेंगे इट हैज सम वेरिएशन सो दैट इट कैन प्ले इट्स रोल. So it kind of normalizes the roles of different neurons in the network or equalizes it. This is one kind of intuition. I'm not exactly telling you mathematically yes or no. This is one kind of intuition. न्यूरॉन कम होगा. जिसके weights, जिस न्यूरॉन में weights बहुत ज़्यादा है, तो उस न्यूरॉन ने चूँकि डॉट प्रोडक्ट लेना है ना काफ़ी सारे नंबर्स के साथ, अगर उन weights का वेरिएंस बहुत ज़्यादा होगा, तो जो आउटपुट निकलेगी ना उस न्यूरॉन में उसका भी वेरिएंस बहुत ज़्यादा होगा. कोई या हाई की वैल्यू की तरफ जाएगी या लो वैल्यू की, इट विल बी वेरीड अपॉन. इट विल नॉट कम इन अ रेंज दैट इज क्लोजर टू 0. समझ आ रही? सो अगर नंबर ऑफ वेट्स ज़्यादा हैं तो उनका वेरिएंस कम करते हैं ताकि आउटपुट का वेरिएंस बहुत ज़्यादा ना हो. आउटपुट को आपने सैचुरेट नहीं करना है. सही. अगर नंबर ऑफ वेट्स कम है तो फिर थोड़ा सा वेरिएंस अलाउ कर दें ताकि वो बिल्कुल 0 पे ना आए. सो द वेरिएंस डिपेंड्स अपॉन the number of weights for each neuron. Different neurons, different weights. So हर neuron को जब आप initialize करने जाते हैं, you apply this. This is one of the suggestion. There are other suggestions as well. और लोगों ने suggestions दी हुई हैं different activation function के साथ.
अगर वैल्यू है तो इस तरह से इनिशियलाइज करें, अगर डैमेज है तो इस तरह से इनिशियलाइज करें, एंड सो ऑन. Make sense? So there are some clever ways of initializing, but randomly initialize कर देना सारे weights को equally. People say there are better ways to initialize and it will stop vanishing or exploding variables in a particular way. It will restrict every neuron to explode or to vanish. It will give you. Make sense? Okay. So batch normalization. एक्सप्लोजन तब होती है जब किसी भी न्यूरॉन में ज़्यादा एक्सेस आए. ज़्यादा नहीं प्लीज. ये ज़्यादा हो लेकिन उसमें वेट ज़्यादा चेंज ज़्यादा आता है, राइट? तो फिर ज़्यादा एक्सप्लोजन हो जाएगी. अगर उसमें वेट्स का वेरिएंस ज़्यादा है तो आउटपुट निकलेगी उसका वेरिएंस भी ज़्यादा होगा. ज़्यादा जल्दी चेंज होगा, ज़्यादा छाने मारेगा. सो वो एक पर्टिकुलर रेंज में एक्सपेक्टेशन आएगी. ठीक है जी. ओके, आई विल एंड हियर. नेक्स्ट लेक्चर आई विल talk about dropout. That's a way of regularization. And then I will talk about convolutional neural networks, the neural networks specially designed for images. And then I will talk about the transfer learning. जब आपके पास डेटा थोड़ा हो और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में ना हो, how will you enjoy the flavor of deep nets with small data and with small computing? Thank you. Last lecture is important because